हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स और महा मैराथन सीरीज एल्गोरिथम पार्ट 3। एल्गोरिथम पार्ट 3 में हम देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ टेक्निक्स एंड सॉर्टिंग मेथड्स जो पेंडिंग था। सो एज आई प्रॉमिस्ड ये लेक्चर आई एम गोना गिव यू ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स व्हिच आई सेड जस्ट नाउ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी टॉपिक है जो ना सिर्फ गेट के लिए इंपॉर्टेंट है बट ऑल्सो एज यू नो कि मेनी प्लेसमेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेवल 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जनरली यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बेटर हो, एफिशिएंट हो, प्रोफिशिएंसी है, तो फिर यू स्टैंड ए गुड चांस टू गेट एब्जॉर्ब इन मल्टीनेशनल कंपनीज, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो इस रिवीजन सीरीज लेक्चर में डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक ओवरव्यू दूंगा मैं मुझे, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक रिवीजन सीरीज। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं फुल फ्लेज कवर करूंगा इसमें, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ टाइम। सो let us try to explore what is dynamic programming and some case studies we will try to understand. This is my telegram channel। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी पूरे रिवीजन सीरीज की और अदर रिसोर्सेस यू कैन एक्सेस इन एडिशन टू इंटरैक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। ठीक है। कुछ बच्चों का ये कंप्लेंट रहता है कि सर आप हिंदी में बोलिए, ज़्यादा हिंदी में बताइए। बेटा, हिंदी में बताने, हिंदी में टीच करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन आपको ज़रूर बताता चलूँ, पहले भी बताया है मैंने और अभी भी बताऊंगा कि देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी वेल वर्स्ड विथ इंग्लिश। देर आर टू रीजन फॉर इट। नंबर वन, आपका जो गेट एग्जाम होगा बेटा वो इंग्लिश में ही आएगा, और मैंने देखा ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में वीक है तो बास क्वेश्चंस आप इंटरप्रेट सही तरीके से नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपका इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकेंडली, आप कल का मतलब फ्यूचर, यू हैव टू वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनीज, वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज। तो आपको कंपनी के बिहाफ पर बाहर जाना पड़ेगा जहां पर आपने इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना जरूरी नहीं है। आप वर्क एनवायरनमेंट में हिंदी में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। तो मेरी अपील है कि किसी भी तरह यू गेन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इन योर ओन इंटरेस्ट, नॉट फॉर माई इंटरेस्ट। ओके, तो चलिएगा। तो ज्यादातर मैं लेक्चर हिंदी में ही रखूंगा, लेकिन नाउ एंड देन, हियर एंड देयर, मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बोलूंगा ताकि आपकी बेटरमेंट के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी। सबसे पहली बात, प्रोग्रामिंग का यहां पर मतलब यह नहीं है कि कोडिंग। प्रोग्रामिंग इज नॉट कोडिंग। सबसे पहला मिसकंसेप्शन। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ टैबुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ द सब प्रॉब्लम्स। क्या मतलब है इसका, आगे देखेंगे। ठीक है। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखिएगा। द पर्सन हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, the person who developed the philosophy of dynamic programming, the paradigm of dynamic programming, is Mr. रिचर्ड बेलमन। तो उनका एक थॉट है जो मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। दिस इज अ पर्सन रिचर्ड बेलमन, जिनके बिहाफ पर एक बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम भी है। आई थॉट डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाज अ गुड नेम। इट वाज समथिंग नॉट इवन अ कांग्रेसमैन, मींस द यूएस पॉलिटिशियन, could object to. So I used it as an umbrella for my activities. मतलब he was working in a corporation, in a company by name Rand Corporation. वहां पर सीक्रेटली ही बेसिकली सॉल्व ऑन दीज प्रॉब्लम्स एंड इवेंचुअली उन्होंने ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम इवॉल्व किया। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग लाइक दिस। सो ब्रीफ हाइलाइट्स यहां पर एक बार देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पैराडाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड बेलमन वे बैक इन 1950s। इट सॉल्व्स एवरी सब प्रॉब्लम जस्ट वंस। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। इट सेव्स इट्स आंसर इन ए टेबल। ये जो प्रोसेस है सेविंग द आंसर इन ए टेबल, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। Avoids the work of recomputing the answer every time. ये important highlights है बच्चों डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। And most often, even though not necessary, most often dynamic programming is applicable to solve optimization problems. What is an optimization problem? Optimization problem वो है कि you would like to maximize or minimize a given criterion within। एक criteria होगा, जैसे profit है, penalty है, right? And cost है, error rate है, which you would like to maximize or minimize. That such problems are called optimization problems. There can be many possible solutions. Each solution has a value and we wish to find a solution with the optimal, that is maximum or minimum value। ये है। ये आपके लिए एक फ्लोचार्ट यहां पे मैंने लाया है, आपको काफी यूजफुल रहेगा। It illustrates, it shows
what are the steps that are to be followed for solving a problem based on dynamic programming. मैं इसे आपको बाद में बताऊंगा डिटेल्स इसके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये कहता चलूं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग एक एल्गोरिथम डिजाइन स्ट्रैटेजी है, एक एल्गोरिथम डिजाइन पैराडाइम है that requires to solve problems whose solutions are seen or viewed as a result of a sequence of decisions. मतलब यह है कि जो भी प्रॉब्लम में आपने कुछ डिसीजंस मेक करना है, यू हैव टू मेक सम डिसीजंस दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग. In most cases, in most of the problems that involves to make sequence of decisions, we can make these decisions in a stepwise manner, like greedy method. लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है for which you cannot make the decisions in a stepwise manner leading to optimality. ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें आप स्टेप वाइज डिसीजंस अगर बनाओगे तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन, आपको फाइनल आंसर नहीं मिलेगा. ये है द पॉइंट. सो यहां पर वही लिखा गया है, देखिएगा. फॉर मेनी अदर प्रॉब्लम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक स्टेप वाइज डिसीजन बेस्ड ऑन लोकल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन लोकल ऑप्टिमैलिटी. ये जो प्रिंसिपल है, ये जो पैराडाइम है, दिस इज ऑफ ग्रीडी मेथड इन सच अ मैनर दैट द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन लीड्स टू ऑप्टिमल. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल यहां पे देख के समझते हैं. बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज हैव अ लुक एट दिस ग्राफ. ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट्स है, एंड दिस इज माय गोल पोजीशन. अगर मुझे स्टार्टिंग पोजीशन से गोल पोजीशन पर जाना हो और अगर मैं ये प्रॉब्लम ग्रीडी मेथड से सॉल्व करूंगा, देन ऑब्वियसली ग्रीडी मेथड क्या कहेगा, एट दिस पर्टिकुलर स्टेट व्हाट एवर आर द अवेलेबल ऑप्शंस, greedily select that option which satisfies your objectivity. हमारी objectivity है to minimize the cost. So greedy strategy क्या करेगा, ये पाथ को लेगा. यहां पर आने के बाद, ये स्टेट पर आने के बाद, obviously the cost of reaching the goal state is 25. तो 2 plus 25 overall cost become 27. तो greedy method बोलेगा, भैया I can reach the goal position at a cost of 27. At a cost of 27. लेकिन अगर आप ग्राफ को गौर से देखोगे, there is another path to reach the destination with a cost value 5 plus 20, 25. 25 is less than 27. तो यहां पर हम बोलेंगे greedy method has failed. आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा विद ग्रीडी मेथड. Why has greedy method failed? ग्रीडी मेथड इसलिए फेल हुआ है कि नो डाउट दिस इज द स्मॉलेस्ट, लेकिन द कॉस्ट ऑफ रीचिंग फ्रॉम दिस स्टेट टू द डेस्टिनेशन may not be optimal, and greedy method does not bother about the subsequent decisions. Subsequent का मतलब next. The next set of decision जो greedy में arise होंगे, greedy method does not bother about the optimality of it. और हमें एक strategy चाहिए which concentrates on the resulting sequence of decisions, resultant path arising from the first state and the first decision. Right? That is the working principle of dynamic programming. Dynamic programming is based on is basically done by making an appeal to what is called principle of global optimality. Principle of global optimality, which states that आपका जो भी state or initial decision हो, the remaining sequence of decision should be optimal with regard to the state resulting from first decision. Right? जो भी decision आप यहां लो, resulting sequence of decision जो होंगे, that should also be optimal. Greedy method does not talk about it. The greedy method does not talk about the resulting sequence of decisions. In dynamic programming, we emphasize on those sequence of decisions. यही कुछ fundamental difference है between greedy and dynamic programming. ठीक है? So one way of solving such problems which cannot be solved using greedy method. अब ये एक और एक example आप यहाँ पर देख सकते हो. एक problem है multi-stage graph, जहाँ पर vertices are in stages. And the restriction on the edges is that I can have an edge from one vertex to, one stage to another stage. देखिएगा, vertex 1 present in stage 1 can only be adjacent to vertices present in stage 2 to stage 3 and so on. और यहां पर हमें shortest path determine करना है. We have to find the shortest path. ठीक है? तो if I apply greedy strategy से देखिएगा, shortest path आएगा यहां पर. We are starting at 1. 2, 3, 7, 9. तो ऑब्वियसली शॉर्ट 2 is the least, तो यहां पे आएंगे. राइट? सो आई विल गो फ्रॉम 1 to 5 बाय ग्रीडी अप्रोच. 5 to 8, देयर आर 2 ऑप्शंस, 8 and 11. सो 8 पे आएंगे. 8 से देखिएगा 10 is less and 10 से 12. द कॉस्ट ऑफ दिस पाथ रिपोर्टेड बाय ग्रीडी मेथड इज 17. कैसे सर? 2 plus 8 10, 10 plus 5 15, 15 plus 2 17. लेकिन if you look at an alternate path in the graph, अगर एक alternate path आप ग्राफ में देखो, I have a path like 1 to 2, 2 to 7, 7 to 10, 10 to 12, and that is minimum. तो यहां पर हम बोलेंगे greedy method has failed. So boys and girls,
like that there are many problems which fails with greedy strategy. So one way of solving such problems which cannot be making their decisions based on local optimality is one approach is to go for brute force. One approach for which you cannot get optimal solution by greedy step by step approach is to go for brute force enumeration. लेकिन ब्रूट फोर्स का ड्रॉबैक ये है कि इट विल कंज्यूम, इट विल इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ स्पेस, exorbitant time, enormous time, humongous time and space complexities रहेंगे with brute force. So other approach is to go for dynamic programming. ठीक है? Dynamic programming is based on enumeration, but it often tries to remove or curtail का मतलब remove करना, those decision sequences from where there is no possibility of getting optimal solution. You may say suboptimal or not optimal solutions. Cut off, remove those. So जिसकी वजह से time complexity में reduction होगा, betterment आएगा, right? So the decisions in dynamic programming are based on by appealing to a principle called principle of global optimality, which states that whatever the initial state and decision are, जो भी आपका state हो और जो भी decision हो, the remaining sequence of decision should also be optimal. जो भी प्रॉब्लम में ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी एप्लीकेबल होगी, आप वो प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सेकंड थिंग इज एज पर द CLRS कॉमन टेक्स्ट बुक, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग? एलिमेंट्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली देयर आर टू थिंग्स. नंबर वन, there are three things I would say. Splitting the problem should be splittable, divide करना चाहिए आपको, जैसे divide and conquer, splitting of the problem. And the sub problem should obey the property of what is called optimal substructure. The sub problem should resemble the original problem in all respects except maybe its size, जैसे divide and conquer में होगा. लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर में प्योर रिकर्शन है, राइट? यहां पर भी रिकर्शन होगा, लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर में ये होगा कि यू विल सॉल्व ऑल द सब प्रॉब्लम्स, एंड डिवाइड एंड कॉन्कर में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, एंड दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. A problems which has the property of splitting the problem into subproblems, and the subproblem resemble the optimal substructure property, means the subproblem resemble the original problem in all respects except that its size may be small, less, and I should have overlapping common subproblems. तो जब common subproblems होंगे तो obviously you can have time optimization. कैसे? You solve the smaller problem once and store the result in a table, in an array, in a vector or some cache, and then you reuse the values again rather than recomputing. So that is called overlapping subproblems. So any problem that exhibit substructure property and overlapping subproblems can be thought of solving it by dynamic programming. There are two ways of solving the problems based on dynamic programming. There are two approaches. One approach is called top-down. The other approach is called bottom-up. Top-down approach is like memoization, is also called memoization, and bottom-up approach is called tabulation. ये समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए आपके नोट्स के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूं एलिमेंट्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया. स्प्लिटिंग ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम टू सब प्रॉब्लम्स एग्जिबिटिंग ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड शुड हैव ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. ये तीनों चीजें समझने के लिए मैं आपको कॉमन एग्जाम्पल दूंगा. मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स में आप देखोगे एग्जाम्पल ऑफ फिबोनाची फॉर एक्सप्लेनिंग द आइडियोलॉजी, द फिलॉसफी, द पैराडाइम, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. वो क्या है फिबोनाची? Computing n Fibonacci number, as you know, everybody know that this is the formula for computing the n Fibonacci number, और ये है Fibonacci series, fib of 0 0, fib of 1 1, fib of 2 1, fib. That means the next number is sum of the previous two. So previous two, ये recursion है. So fib of n is equal to 1 for n is equal to 1, fib of n, ये base condition, right? अगर ये formula को आप directly implement करोगे without DP, this is normal recursive implementation of fib of n without dynamic programming, boys and girls. देखिएगा please. नॉर्मल रिकर्शन. तो अगर आप ये कॉल देखोगे, इफ यू सी दिस नॉर्मल रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, यू कैन विजुअलाइज इट बाय मींस ऑफ सम रिकर्शन ट्री. लाइक फॉर एग्जांपल आई कॉल फिब ऑफ, आई एम राइटिंग फिब इन शॉर्ट एफ, फिब ऑफ 5. यहां पर मैं आपको ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम की फिलॉसफी बताऊंगा. फिब ऑफ 5 एज पर द फॉर्मूला विल बी कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ फिब ऑफ 4 एंड फिब ऑफ 3.
Fib of 4 will be computed in terms of fib of 3 and fib of 2. Fib of 3 will be computed in terms of fib of 2 and fib of 1. ठीक है? Fib of 2 will be computed in terms of fib of 1 and fib of 0 as per the formula. फिर उसके बाद fib of 2 will be again recomputed in terms of 1 and fib of 0. फिर उसके बाद fib of 3 will be again computed in terms of fib of 2 as per this normal recursion fib of 1. Fib of 2 will be computed in terms of fib of 1 and fib of 0. Boys and girls, I would like to emphasize here that आप देखोगे fib of 3 एक बार यहाँ पे कंप्यूट होने के बाद फिर से रिकम्प्यूट हो रहा है. fib of 2 यहाँ कंप्यूट होने के बाद फिर से कंप्यूट हो रहा है, फिर से कंप्यूट हो रहा है. मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स. तो ये है व्हाट आर कॉल्ड सब प्रॉब्लम्स, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स लाइक fib of 3, fib of 3. फिर उसके बाद आप कहोगे fib of 2, ओवरलैपिंग हियर, fib of 2. ये है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. तो यहां पर आप देखोगे बिकॉज ऑफ दिस रिकम्प्यूटेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. अगर ये आप नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन जो अभी मैंने आपको बताया है, नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करोगे, इफ यू अज्यूम दिस एज ए नॉर्मल फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की बनेगी ऑर्डर ऑफ 2 power n. क्यों? First node, first level I have 2 power 0 nodes, next 2 power 1, next 2 power 2, almost 2 power 3, 2 power 4 like that. So almost you can substantiate it as order of 2 power n. The upper bound time of computing n Fibonacci number using normal recursion is exponential time order of 2 power n. क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं इन 2 ways. मेमोराइजेशन अप्रोच बता रहा हूं और आपको टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच दोनों भी बताऊंगा. This is the first implementation, boys and girls, top-down implementation of computing the n Fibonacci number using memoized approach, memoization. तो यहां पर होगा ये कि for computing n Fibonacci number, fifth Fibonacci number, for example, हम एक array लेंगे. The size of the array will be n. Like I'm computing fib of 5, so I'm going to take an array. Let us call this array by name m. M of 0, M of 1, M of 2, M of 3, M of 4, M of 5. So I'm calling that memfib, memoized approach of Fibonacci, memfib of n. M of n is undefined. Initially all values are not defined. I'm saying infinity, matlab not defined. So here a table में अगर value of Fibonacci of n is not defined, then I enter here if n is less than or equal to n, result is equal to n, which I will store it here. Else अगर ये value नहीं है defined, then I will make a recursive call to fib of n minus 1, then fib of n minus 2. So it keeps on working until I start storing the values. So first यहाँ पर value आ गई और आप सबसे if you without drawing the recursion tree अगर आप देखो, this value will be outputted here as 0 और यहाँ पर आप output करोगे 1. फिर recursive call से आप return करोगे, then you are going to store memfib of 2 as value 1. फिर memfib of 3 will get stored as value 2. So now what I wanted to say, later जब भी आपको in the computation of the memfib of 4, if you encounter memfib of 3 or memfib of 2, तो आपको values available है, you are not going to reevaluate again, you are going to reuse it again. So therefore this value will be computed as 2 plus 1 3, this value will be computed as 3 plus 2 5, like that. That means recursion tree अगर आप बनाओगे, now with this approach, fib of 5 will be computed in terms of fib of 4, fib of 3. लेकिन first recursion होगा fib of 4 का, fib of 3 जाएगा, fib of 2 होगा. Fib of 3 will compute fib of 2, fib of 1. Fib of 2 will evaluate fib of 1, fib of 0. अब देखिएगा ये वैल्यूज आपने स्टोर कर दिए थे. इसके बाद क्या होगा देखिएगा, right? Fib of 1 already stored, so we are going to take the value which is stored from here, for example. फिर उसके बाद आप recursion stack, now you are going to add the values of fib of 1 and fib of 0 and store it here in memfib of 2. Then these two values are returned to this, these two values are returned to fib of 3. Now fib of 2 is already computed, so we are going to use the value from fib of 2, though we are not going to reevaluate again. Fib of 3 value is computed of fib of 3 and this will return the value to fib of 4, return the value to fib of 2. Fib of 3 again I need, value is already there, so यहाँ से हम इसे consume करेंगे. So essentially we are going to make only n Fibonacci calls. So therefore the time complexity of this algorithm now will become number of recursive calls in depth order of n.
So time complexity has been reduced from order of 2 power n to order of n with memoized top-down implementation. Top-down इसे कहते हैं कि it is going from top to bottom of the recursion in computing the value. So therefore यहां पर reusability हुई है. Reusability. We have reused the values of fib of 3, fib of 2, fib of 1. ये एडवांटेज है rather than recompute. देखिएगा ट्री में अर्लियर वी वर रिकम्प्यूटिंग, अब यहां पर ट्री स्ट्रक्चर ऐसा था पहले, अब ट्री स्ट्रक्चर ऐसे ही हो गया. ये एडवांटेज है मेमोइज्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग का. इसका और एक दूसरा इंप्लीमेंटेशन है बॉटम अप अप्रोच ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉर कंप्यूटिंग इन फिबोनाची नंबर. ये टैबुलेशन अप्रोच है, नॉन रिकर्सिव आइटरेटिव अप्रोच है. एम एन इज एन अरे, एम ऑफ 0 इज 0, एम ऑफ 1 इज 1, और यहां पर बॉटम ऑफ फैशन में आप कंप्यूट कर रहे हैं वैल्यूज. एम ऑफ आई इज इक्वल टू एम ऑफ आई माइनस 1 प्लस एम ऑफ आई प्लस 2 आई माइनस 2. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम अनडाउटेडली आप कहोगे इज ऑर्डर ऑफ एन. So boys and girls, normal recursive implementation of Fibonacci sequence is order of 2 power n. And memoized implementation and bottom-up implementation, tabulation implementation of computing in Fibonacci number is order of n, linear in polynomial time. Polynomial in linear time. ठीक है, order of n. ये है एडवांटेज ऑफ डायनेमिक. तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो भी प्रॉब्लम आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना चाह रहे हो, दो तीन चीजें आपने देखना है. स्प्लिटिंग ऑफ द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी बीइंग सेटिस्फाइड बाय सब प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम. ये तीनों चीजें हैं तो आप यू कैन सॉल्व इट यूजिंग आइदर टॉप डाउन फिलॉसफी और बॉटम अप फिलॉसफी. अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड. अब यहां पर हम फ्लो चार्ट पे आएंगे. व्हाट आर द स्टेप्स, ये है, देखिएगा स्टेप्स. जनरली देयर आर 6 स्टेप्स. नंबर 1, रिकॉग्नाइज द डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम को आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हो. स्टेप 1. स्टेप 2, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम वेरिएबल्स. एक नोटेशन से इवॉल्व कीजिएगा, रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. अभी आपको बताऊंगा मैं. थर्ड, एक्सप्रेस द रिकरेंस रिलेशन. सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सम रिकरेंस. फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द बेस केस. हर एक रिकरेंस का बेस केस होगा. नेक्स्ट, डिसाइड द आइटरेटिव और रिकर्सिव अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम. आइटरेटिव अप्रोच से सॉल्व करना चाहोगे या रिकर्सिव अप्रोच से, जैसा फिबोनाची का मैंने आपको बताया. देन फाइनली ऐड मेमोइजेशन. इन बोथ द केसेस मेमोइजेशन इज यूज्ड. सो दिस इज द आइडियोलॉजी और अप्रोच टू बी फॉलोड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग. तो ये है, देखिएगा, वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच यू कैन सॉल्व. जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कपल ऑफ लाइक मल्टी स्टेज ग्राफ का अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहो यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो हमने अभी कहा कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी एप्लीकेबल है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम डेमोंस्ट्रेट कर सकते हो आप. तो फिर वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करके इसका सॉल्यूशन रिकरेंस कैसे बनाओगे, बाउंड्री कंडीशन, बेस कंडीशन कैसे बनाओगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो let us imagine that the graph is represented by a cost adjacency matrix. Let us call it as C. So Cij is edge cost. Cij is edge cost. तो हमें चाहिए path cost, path from source to destination. Let us call the source has some V0 and this is our destination T. So here we'll write let cost of Ij represent cost of the path, not vertex, not edge, cost of the path from vertex J in stage I stage number, to destination T. So you want to optimize the cost of the path, minimize the cost of the path from J to T. J is present in stage I. ये मतलब है is cost of Ij. तो इसे आप मिनिमाइज करना चाहोगे, राइट? सो देयरफॉर हाउ डू यू मिनिमाइज इट? फ्रॉम J I should go to some vertex K where K is present in stage I plus 1, such that there is a net between J and K. तो इसे आप कैसे लिखोगे इक्वेशन? You will write it like this. Cost of Ij is equal to, you want to minimize the cost of the path, so therefore minimization of. So from J I should go to some vertex K. So cost of the edge is given by, cost of that edge is given by C of J comma K plus cost of the path, subpath from K to T. So that can be expressed recursively in terms of the function cost. This cost of stage I plus 1. So I plus 1 comma K. Where I say K belong to a vertex in stage I plus 1 and J comma K must be an edge. J comma K belongs to. ये है recurrence.
So I've selected the variable cost and then express the equation. This expression of equation is purely based on principle of optimality. Whatever my initial state and decision are, the remaining sequence of decision, remaining cost of the path is given by this parameter, optimal substructure. ये optimal, ये सब problem है, सब path है. So that is what. So every problem will exhibit this property. हर एक problem जो भी solve करो आप will exhibit this property. ठीक है? So and then the boundary condition of this will become like cost of the vertices present in. अगर if you say multi-stage graph is an L stage graph, so last but one is L minus one. So L minus one, comma some vertex j, vertex j present in L minus one state will be connected to destination T directly by means of an edge. So this will be given by C of j comma T. This is the boundary condition. तो हर एक प्रॉब्लम के लिए आफ्टर सीइंग दैट प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, दैट प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी इज एप्लीकेबल, आप इस तरीके से फॉर्मूला या सॉल्यूशन रिकरेंस बनाओगे यूजिंग सम वेरिएबल, डिराइव द रिकरेंस. एक और प्रॉब्लम का आपको डेरिवेशन ऑफ रिकरेंस बताऊंगा, फेमस प्रॉब्लम है, वो है सेकेंड प्रॉब्लम, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ्स. वेरी फेमस प्रॉब्लम, गेट में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं. ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ्स. दिस प्रॉब्लम विच इज सॉल्वेबल बाय द एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लॉयड-वार्शल्स एल्गोरिथम. एक डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको दी जाएगी एंड देन यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम every vertex to every other vertex. Shortest path from every vertex to every other vertex. All pair shortest path. Single source shortest path का extension है ये. Okay? In single source shortest path, you find the shortest path from one source to all other vertices. यहाँ पर all sources, every vertex to every other vertex. ठीक है? तो how is principle of optimality applicable and how do you find the optimal substructure solution? That we will see. Suppose if I have some directed graph like this, right? Something like this. इस तरीके के है. Then you have cost adjacency matrix also. You can put some cost values also, like this 5, this is 10, this 2, this is 3, this is 8, something like this. अब आपने shortest path determine करना है from 1 to all, 2 to all, 3 to all. तो cost adjacency matrix is represented by C again, और आपने path matrix compute करना है. So let us imagine a function, let a power kij represent cost of the path from vertex I, which is source, to vertex j, which is destination, with k being highest intermediate vertex. एक path में कई intermediate vertex हो सकते हैं, तो यहां पर हम कह रहे हैं k is the highest intermediate vertex, k being the highest intermediate vertex. तो इसे हम इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे? लेट अस डिराइव द फॉर्मूला. So like multi-stage graph, here we can follow again an optimization criteria. I would like to minimize the cost of the path, so I say minimum of. Now k is the highest intermediate vertex between I and j. Shortest path may go through k, may not go through k. ये दोनों का जो भी possible minimum होगा वो a power k I j. Shortest path, again I repeat, may go through k, may not go through k. And highest intermediate vertex can be n for any graph. अगर मेरे ग्राफ में 3 vertices है, एक highest intermediate vertex क्या हो सकती है? Vertex number n, vertex number 3. उसके बाद क्या हो सकती है? 2 होता है. So I try for all possible intermediate vertices and then I will try to take max of all. ठीक है? So here I say between I and j, if k is the highest intermediate vertex, I am saying that the shortest path may go through k, may not go through k. अगर if it is not going through k, then the next highest intermediate vertex can be k minus 1. And if it is going through k, then I can break up my path into substructure I to k and k to j. तो यही कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन. If it is not going through k, then k minus 1 is the next highest intermediate vertex between I and j. Or if it is going through k, then I can break up my path from I to k plus k to j substructure. And the highest intermediate vertex from I to k will be k minus 1 mathematically, and this will also be k minus 1. ये recurrence है. ये recurrence है. Boundary condition क्या होगा इसका? This will be done for k is equal to 1 to n max for all possible intermediate vertices. So if I start with
n, this will be n minus 1, n minus 1, n minus 2, n minus 2, n minus 3, इस तरीके से जाएगा. लाइक अगर मेरे ग्राफ में 3 वर्टिसेस है, 3 expressed in terms of 2, 2 in terms of 1, 1 in terms of 0. So a power 0 will become my boundary condition. A power 0 of ij will become boundary condition. This means cost of the path from I to j with 0 intermediate vertex, with no intermediate vertex, that will be an edge. That will be an edge. And edge cost is given input. तो ये हो गया है हमारा solution to the problem. So every problem will have a solution like this, which is expressed as a recurrence. तो कोई भी problem लीजिए आप, traveling salesperson, longest common subsequence, matrix chain multiplication, or as a matter of fact, any problem, you can always apply the same strategy. So I leave it for you to work out the remaining problems in the same way. And as I said, this is a summarization or the revision series, so I cannot take up all the problems as such. उसके लिए आपको मेरा full fledged course देखना पड़ेगा, जहां पर मैं nearly 10 to 12 problems of dynamic programming I discuss from the gate perspective. ठीक है? तो you can follow like applications of matrix chain multiplication is another problem, and like 0-1 knapsack is another problem, and like that. Practice question भी आपको idea लगेगा कि how basically problems have been asked, like the time complexity of Fibonacci series by using dynamic programming and without using dynamic programming. Dynamic programming use करते हुए आप order of n होगा, अभी हमने देखा. Without dynamic programming order of 2 power n. करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी. उसी तरह देखिएगा, एक प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो, PYQ है, मैट्रिक्स चेन प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, या आप यू कैन वर्क आउट. लाइक अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. Floyd-Warshall's algorithm for all pay shortest path computation is based on which paradigm? Dynamic programming. So answer is C. PYQ है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए. These are question related to longest common subsequence. तो अगर आप प्रॉब्लम अच्छी तरीके से पढ़ोगे, फॉर्मूला आपको पता होगा, दो स्ट्रिंग्स का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आप डिटरमिन कर सकते हो. वैसे कितने सबसीक्वेंसेस है आप वो भी डिटरमिन कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द आंसर. ठीक है, एंड मैट्रिक्स चेन प्रोडक्ट है, इसका आंसर अगर आप इवैल्यूएट करोगे विल कम आउट टू बी 19,000. यू कैन डू दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. ये भी एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं PYQ सीरीज में भी मैं डिस्कस किया हूं, आप वहां पे देख सकते हो इसका सोल्यूशन. दिस इज लॉन्गेस्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, तो इसका भी सोल्यूशन इज थ्रू डायनामिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम. ठीक है, तो दीज आर the various kind of problems to give you an idea कि what kind of problems, how the questions are asked in dynamic programming. तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, जहां पर हम प्रेजेंट करेंगे ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम्स या ग्राफ टेक्निक्स, जहां पर एम्फसाइजेशन होगा ऑन ट्रैवर्सल्स. सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ टेक्निक्स या ग्राफ ट्रैवर्सल्स. ठीक है, तो as you know there are two important graph traversals. Like one is called depth first search and the other is called breadth first search. Depth first search and breadth first search. Like tree traversals, we have graph traversals. Fundamental difference between tree traversal and graph traversal is that tree traversal is always unique. Graph traversal may not be unique or is not unique. I can have multiple depth first search sequence for a graph. I can have multiple breadth first search sequence for a graph, unlike tree traversal. Depth first search can be performed on maybe undirected graphs, which is very, very simple, or maybe also performed, you can perform it on directed graphs and special directed graphs like DAG. And same thing for breadth first search. डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग द अनविजिटेड नोड्स और अनप्रोसेस्ड नोड्स, लाइव नोड्स जो हम कहेंगे, दैट इज स्टैक. सो हियर वी यूज स्टैक, एंड हियर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में आप डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे प्रोमिनेंटली फॉलोइंग P4 discipline. You following P4 discipline. So these data structures are used to store the live nodes in the case of the traversal. तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे अनडायरेक्टेड ग्राफ्स की, इट मे बी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड ग्राफ. लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव अ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ लाइक दिस ABC. If you perform the depth first search of this, I can start from any vertex, is it not? I can start any vertex. This vertex is called right now the E node, exploring node. I process its information, that is A, and then I can visit either B or C. Like for example, if I visit B, so this is my first node to be processed, the second node to be processed. I process the information of node B,
and B has one child, namely C. So I proceed in depth. That's why it is called depth first search. This is the third node to be visited. So therefore, this is one particular DFS traversal. I can traverse in the order ABC. या फिर आप कर सकते हो ACB. This is also one possibility. You can start from B. So therefore, I can have BAC, or starting from B, I can have BCA. I can have start from C and then go to A and then B, or I can say start from C and then go to B, then go to A. ये है possible depth first search traversals of this. Depth first search can also be performed on undirected, disjoint, disconnected graph. Generally, that is called DFT, depth first traversal. लेकिन prominently, depth first search is more important in directed graphs. So when you carry out depth first search in directed graphs, generally I have the following types of edges जो काफी ज्यादा important है आपको याद रखने के लिए. First, I will have tree edges. The edges which are part of the depth first search spanning tree are called tree edges. ये edges जो है tree edges है. Or I can have a forward edge. I can have a forward edge. Forward edge वो edge है that will lead from a node to its non-child descendant. That is called forward edge. Lead from a node to its non-child descendant. जैसे कि यह देखिएगा. ये एक node है and it is connecting this vertex. This vertex is not a child of this node, non-child, grandchild है. This edge connecting them is called forward. Back is reverse, connecting from a node to its ancestor. That is called back edge. Not backward, back edge. And a third type of edge or fourth type of edge is called cross. Cross will connect from a node to another node which is neither ancestor nor descendant. That is called cross. जैसे कि for example एक example लेके समझेंगे. I have the following graph. मैं एक sample graph लूंगा to understand that. Boys and girls, please have a look. Is vertex A, vertex B, vertex C, and vertex D. And I have the following edges. Let us see. I'm taking the following graph. This is my graph. G is equal to V का मान. अब यहां पर मैं एक ऑर्डर आपको बताऊंगा. यू हैव टू असर्टेन, यू हैव टू टेल वेदर दिस इज अ वैलिड डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ दिस ग्राफ और नॉट. आपने बताना है मुझे, इज दिस अ वैलिड डेप्थ फर्स्ट सर्च और नॉट. चलिए देखिएगा प्लीज. मैं आपको देन क्लासिफाई करूंगा व्हाट इज अ ट्री एज, व्हाट इज अ फॉरवर्ड एज, व्हाट इज अ क्रॉस एज. So my dear student, boys and girls, please have a look at this graph carefully. This is my graph. As I am beginning my traversal from vertex से यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. From A, I have options. Either I can go to D or B. मैंने पहले B पे गया. This is one possibility. This is only one possibility. A to B. From B, I have option. I can go to D. I can go to C. First, I am going to C. First, I am going to C. So the order है 1, this is 2, then this is 3. From C, I cannot go back to A. Is already done. And there is no edges, so I backtrack to B, and from B have another option. I can go to D. This is the fourth vertex to visit it. तो ये जो तीन edges है A B B C C D B D, these are called tree edges. और अब हम क्या करना है? Those edges which are there in the graph but not in the spanning tree. Edges that are there in the graph but not in spanning tree. अगर आप mark करोगे यहां पर, those edges will be either classified as forward, back and cross. चलिए देखते हैं forward, back and cross. Starting from A. I have an edge from A to D. Look at this, A to D. अगर वो edge मैं यहां पर mark करूं, if I mark that edge A to D with a broken line, I am indicating because ये extra edge है that is not there in the original traversal. A to D. It is going from a node to non-child descendant. ये non-child descendant है. ये child है या non-child या grandchild. That edge is called forward. उसी तरह अब देखिएगा C to A there is an edge. अगर मैं यहां पे mark करूं C to edge, C to A अगर मैं यहां पे मार्क करूं, it is going from a node to its ancestor. A is an ancestor of C. This is called back edge. एक और एज है देखिए D to C. अगर मैं यहां पे मार्क करूं D to C, D to C डिफरेंट कलर से मार्क करेंगे. D to C अगर मैं मार्क करूं, this edge is called cross because it is connecting D and C are neither ancestors, non-descendant, they are siblings. So ये है classification of edges. काफी क्वेश्चंस आए हैं PYQs में on graph traversals. तो आपने अच्छी familiarity डेवलप करना है. Depth first search when carried out
on a DAG leads to what is called topological sort. काफी क्वेश्चंस आए हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट के ऊपर, राइट। DAG में you will have one or more source, one or more sink vertices without any cycle. वहां पर आप डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म करोगे, इट विल लीड टू जनरेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल सॉर्ट, व्हिच इज अ लीनियर ऑर्डर exhibiting the precedences among the vertices, right? So this is another example of it, showing tree edges and back edges, right? This is the topological order of this graph which I said just now. ये topological order है इसका, देखिए linear order. Like अगर ये ग्राफ का topological order अगर आप मार्क करो, how many topological orders it has? It will start with that vertex which is not having any incoming in degree 0, no incoming edge, means B. B के बाद I can go to A or D, I can go to A or D. topological orders मार्क कर रहा हूं मैं। A के बाद आपने प्रोसेस करना है D, D के बाद आपने प्रोसेस करना है A, क्योंकि C के लिए डिपेंडेंसी है A and D. तो now after D you have to go to C, after A you have to go to C. From C I have options, either I can go to E or I can go to F. From here I can go to E, I can go to F. E के बाद F होगा, F के बाद E होगा, E के बाद F होगा, F के बाद E होगा। तो this graph has got 4 topological orderings. इस तरीके से आपने डिटरमिन करना है टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग्स ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो चलिए, काफी क्वेश्चंस टोपोलॉजिकल ऑर्डर पे भी आए हैं। एक और एप्लीकेशंस है विथ रिगार्ड टू ग्राफ ट्रैवर्सल्स, वो है आर्टिकुलेशन पॉइंट्स एंड बाई कनेक्टेड कंपोनेंट्स। Articulation point, also called cut vertex, is that vertex in the graph, is that vertex in the graph, the removal of which, अगर आप vertex को cut कर दो, remove कर दो along with all its edges, it will partition the graph into 2 or more non-empty components. It will divide the graph, cut the graph into 2 or more non-empty components. जैसे कि vertex है, this articulation point, vertex 2 is articulating, vertex 5 is an articulating. अगर कोई ग्राफ में articulation point है तो that graph is called non-biconnected, otherwise it is called biconnected, otherwise it is called biconnected. ये ग्राफ है, एक सिंपल क्वेश्चन आप ले सकते हो, ये ग्राफ है, उसका डेप्थ फर्स्ट सर्च, विच आर द वैलिड डेप्थ फर्स्ट सर्च, यू कैन ट्राई वर्किंग आउट। लाइक आई जस्ट वर्क आउट वन, A, B possible, E possible, G possible, H possible, F possible. This is one of the valid depth first search traversal. उसी तरह other traversals you can, other orderings you can check whether they are valid or invalid. इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लाइक नाउ व्हेन यू कम टू ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में क्या होगा? ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझते हैं। लाइक इफ आई हैव दिस ग्राफ, इफ आई हैव दिस ग्राफ, this vertex A, vertex B, vertex C, vertex D, vertex E. When I start from vertex A, any vertex I can start, I start from A. E is my current E node, exploring node. How many children it has? All its children are generated and they are added in the queue. So in the queue I will add B followed by C followed by D in this order. तो सबसे पहले हम B को लेंगे, B को प्रोसेस करेंगे, so B will generate. So B का एक चाइल्ड है E, E get added because E is not visited. उसके बाद C को प्रोसेस करेंगे, right? C will also try to add, E is already visited. So next हम प्रोसेस करेंगे D को, and then finally E generated from B will get processed here. This is one of the breadth first traversal order. एक क्वेश्चन है PYQ देखिएगा. Like for this graph, he said among these 4 options you have to decide which of them is a valid breadth first search order. एक का मैं करूंगा, बाकी का आप ट्राई कर सकते हो. Is this valid breadth first search traversal of this graph or not? We are saying. We are starting from M. अब देखिएगा M के कितने चिल्ड्रंस है? R, Q, N. किसी भी ऑर्डर में आप जनरेट कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में आप विजिट कर सकते हो. यहां पर N को कर रहे हैं, ठीक है, पॉसिबल है. उसके बाद O नहीं आ सकता बच्चा, क्योंकि O इज नॉट द चाइल्ड ऑफ M, ये नहीं होगा. सो देयरफॉर दिस इनवैलिड. उसी तरह B देखिएगा, अगर आप N से स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर स्टार्टिंग ब्रेडथ फर्स्ट सर्च फ्रॉम N, ठीक है, N से स्टार्ट कर रहे हो, N के 3 चिल्ड्रंस है, M, O, Q. कोई भी एक ऑर्डर में विजिट करना है आपको. सो Q इज पॉसिबल, ठीक है, राइट. Q के बाद M इज पॉसिबल, ठीक है. M के बाद O आना चाहिए, क्योंकि O इज द चाइल्ड ऑफ N. You cannot come to P, you cannot come to P, so therefore this is wrong. ये गलत है. इसी तरह और एक ऑप्शन आप ट्राई करो. आप लाइक फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट विथ Q के 3 चिल्ड्रन है, M, N एंड P. ये पहले विजिट होना, M एंड P, करेक्ट है, यहां तक ठीक है. अब अगर M को पहले आप विजिट किए, M के चाइल्ड क्या है? R आना चाहिए. P, M एंड P के बाद R आया है, R के बाद फाइनली O आएगा. दैट्स देयरफॉर दिस वन ऑफ द वैलिड डेप्थ फर्स्ट ब्रेडथ फर्स्ट ट्रैवर्सल ऑफ दिस. इस तरीके से आपने डिटरमिन करना है. तो these were the type of questions which are asked on depth first search. Like अगर ये भी एक क्वेश्चन देखो आप, consider the following undirected graph on 5 nodes. Assuming you are performing breadth first search on this graph using a queue data structure,
How many unique breadth first search orderings are possible? अगर आप ये vertices को name करोगे, if you name the vertices like A, B, C, D, E, तो I can begin my breadth first search from any vertex. अगर मैं E से E से start करूं from E, then how many combinations I have? A, B, C, D in any order. So therefore 4 factorial. So if I'm starting from E, I have 4 factorial possibilities. A, B, C, D. Otherwise, if I'm starting from either A, let us say I start from A, तो मेरे पास कितने possibilities होंगे? D, B, E, D, B, E, 3 factorial possibilities. Right? उसके बाद तो C आएगा. D, B, 3 factorial possibilities with A. उसी तरह B 3 factorial, D 3 factorial, C 3 factorial. मतलब for 4 vertices I have 3 factorial possibilities. मतलब this itself will become 4 factorial. तो आपका total answer दोनों को combine करने से क्या बनेगा? 2 into 4 factorial. So what is 4 factorial? बोलिए 4 into 3 into 2, 12 to 24, 2 into 24, 2 into 24 which is 48. तो आपका आंसर बनेगा 48. Answer is C. Okay, these are the type of questions which you can expect in this. Like that, you can try this as a homework, like classifying the edges as tree edges, back edges, cross edges, forward edges for this graph. Okay? As a question, like number of topological orderings, you can try this as homework. And then these are the other options which you can try for this. Lastly, I would like to make a brief discussion with regard to sorting methods. Sorting एक ऐसा topic है which is common in programming डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. तो आपने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स में कुछ हद तक सॉर्टिंग मेथड्स पढ़े हैं और हमने लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है डिवाइड एंड कॉन्कर में 2 सॉर्टिंग मेथड्स, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट. हीप एल्गोरिथम्स में आपने पढ़ा होगा हीप सॉर्ट. अब यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स है जैसे सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है. इनकी थोड़ी फेमिलियरिटी डेवलप कीजिएगा और उसके साथ साथ आपको जनरली आपने क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा. Like first, classification of sorting. Classification of sorting techniques. ठीक है, जैसे कि for example you can classify sorting techniques as internal versus external. ठीक है, and then you can classify them as comparison versus non-comparison based. Comparison versus non-comparison based. And then in place versus not in place. ये important terms है. Stable versus unstable. ठीक है, एंड मे बी इन रिकर्सिव वर्सेस नॉन रिकर्सिव, ये भी एक वीक क्लासिफिकेशन है, वीक क्लासिफिकेशन है. यू कैन इंप्लीमेंट इट इन रिकर्सिव वे और नॉन रिकर्सिव वे. ऑफ कोर्स दैट इज अ वीक क्लासिफिकेशन, लेकिन आप रख सकते हो अपनी कैटेगरीज में. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस. सॉर्टिंग मेथड व्हेन इज इट सेड टू बी इंटरनल? अगर सारे एलिमेंट्स मेमोरी में रहना चाहिए फॉर सॉर्टिंग, दैट इज इंटरनल. अगर जरूरी नहीं है कि ऑल एलिमेंट शुड बी एट वन प्लेस इन द मेमोरी, दैट इज एक्सटर्नल. ठीक है, sorting method can be comparison or non-comparison based. Selection sort, merge sort, heap sort, quick sort, these are all comparison. Radix sort is non-comparison based. In place, अगर sorting method constant amount of auxiliary space ले रहा है या at most for recursive implementation log n space ले रहा है, then it is in place. Otherwise it is said to be not in place. जैसे merge sort is not in place क्योंकि उसकी space complexity order of n है. It require an additional array of size n. So it is not in place. Stable. If the non-distinct elements relative order is maintained in the sorted list as in the compared to its original unsorted list, then it is said to be stable. Quick sort is not stable, heap sort is not stable. Right? Non-distinct elements का relative position अगर maintain हो रहा है sorted list में as is in compared to its original unsorted list, then it is stable. Otherwise, it is said to be unstable. So, desirable property of a sorting technique is that it should be stable, it should be in place. And finally, boys and girls, I would like to make a mention that the time complexity of a sorting method is a function of two parameters.
It is a function of two parameters, number of comparisons and number of swaps. Time complexity of comparison based sort depend करेगी number of comparisons or number of swaps पर. And I would like to make a mention that number of swaps is essentially dependent on a metric called inversion. It depends on a parameter called metric called inversion. What is inversion? If I and j are two indices of an array, and if I is less than j, and a of I is greater than a of j, then the pair ij is known as inversion of the array. अगर array increasing order में हो तो inversions are 0. अगर array decreasing order में हो तो you will have maximum inversions, which is n into n minus 1 by 2, order of n square होंगे. जितने inversions कम होंगे array में sorting time उतना कम लगेगा, जितने inversions ज्यादा होंगे sorting time उतना ज्यादा लगेगा. ठीक है, तो ये है बेसिकली द एम्फसाइजेशन ऑन दिस. लाइक एक बेसिक का आपके लिए रिव्यू है विद रिगार्ड टू सॉर्टिंग और एप्लीकेशंस ऑफ सॉर्टिंग. आपके नोट्स के लिए काम आएगा, बाद में आप पढ़ लीजिएगा. मेरी अपील है, मैं यहाँ पे ट्रेस तो नहीं करूंगा इन डिटेल. मैं चाहूंगा कि 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि PYQs में बेसिकली क्वेश्चंस आए हैं ऑन बबल सॉर्ट एंड देन इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट. बबल सॉर्ट का ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंप्लीमेंटेशन है विदाउट फ्लैग वैल्यू. ये इंप्लीमेंटेशन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट बनेगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, which is number of comparisons and number of swaps. ठीक है, इसका टाइम आप थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हो by using a flag variable, right? जहां पर अगर array increasing order में हो तो एक पास में you can come out and then the time complexity of that will become order of n bubble sort. उसी तरह the selection sort है, right? जहां पर selection इसलिए कहते हैं कि you are going to select in every iteration the ith smallest element, first smallest element, next iteration second smallest element, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट. इस तरीके से अगर आप करोगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रहेगी. लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक ऐसा सॉर्टिंग टेक्निक है दैट विल रिक्वायर द लीस्ट नंबर ऑफ स्वैप्स, क्योंकि स्वैप ऑपरेशन इज आउटसाइड द इनर लूप, आउटर लूप में है. सो बिकॉज ऑफ दिस द नंबर ऑफ स्वैप्स needed for selection sort is never more than order of n. No other sorting technique will exhibit this property. The minimum number of swaps required in the worst case is for selection sort, which will require order of n time, number of swaps. चलिए next. Insertion sort एक काफी अच्छा interesting sorting technique है. It is based on inserting an element into a partial sorted list. अगर आपकी इस तरीके से ओरिजिनल लिस्ट है which is divided in two parts, one part is partial sorted list and the other is unsorted list. तो होगा ये एक एक iteration में you are going to select one element and you are going to insert it at the correct place in the partial sorted list. ये worst case में इसका time complexity बनेगी order of n square, best case में इसकी time complexity बनेगी order of n. ये best case है. Best case तब होगा when the elements are already in increasing order, और worst case तब होगा when the elements are in decreasing order, descending order. Selection, insertion sort. It inserts one element at a time from an unsorted list to a sorted list, partial sorted list. That's why it is called insertion sort. और इसका behavior it will work like external sorting. ये है philosophy of it. ठीक है, ये insertion sort है. Sorting technique is called stable. कुछ क्वेश्चन देखेंगे. It maintain the relative order of the elements. ये है आंसर इसका, of non-distinct elements. ये देखिए ऐसे comparisons आएंगे. Which of the following are quick sort runs in order of n square time? अगर ascending order में है, the input is already in ascending order. Quick sort, हाँ बिल्कुल order of n square time लगा, क्योंकि that is the philosophy of bubble sort. Order of n square we don't know, it depends on the flag. Merge sort runs in order of n time, गलत बात है. Insertion sort runs in order of n time, so therefore 1 and 4 are correct. मतलब option D is correct. किस तरीके के क्वेश्चंस आप वर्कआउट कर सकते हो. वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ये n स्क्वायर है, ये ऑलवेज विल बी n log n. क्विक सॉर्ट इज वर्स्ट केस में n स्क्वायर, सो n स्क्वायर n log n एंड n स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर,
इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं. यू कैन बेसिकली थिंक ऑफ सॉल्विंग देम विथ रेडिक्स सॉर्ट ऑल्सो एंड सम क्वेश्चंस. ये एक क्वेश्चन देखिएगा. Which of the following sorting algorithms has running time of theta of n square in the worst case and n log n in the case of average case, right? N log n in average case. ये quick sort की philosophy है. Quick sort have this behavior. Worst case में n square है, average case में n log n. इस तरीके के questions भी आए हैं, right? So this is what I have for the discussion on dynamic programming, graph traversals and sorting methods. So enjoy yourself. This is only for revision purpose. As I said, आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी by means of this session, and I'm very sure and wish you all the best for your forthcoming GATE exam. Thank you so much.